Now, moving forward with Elton Mayo, as we understand that a person cannot be, or employees cannot be in your business just because you're paying them. It is also because of the environment, the goal which the company has, and what type of culture the organization promotes. That's the major thing which will be looked out for. It won't be salary is something you will look out at the start instances, लेकिन उसके बाद जो है अगर सैलरी ज्यादा है, खाली सैलरी ज्यादा होना है तो फिर पाब्लो चाचो के पास जो लोग काम कर रहे थे उनके पास बहुत ज्यादा सैलरी थी, पैसा बहुत था उनके पास, कुछ भी कर सकते थे क्या पैसे के साथ वो लोग? नहीं, क्यों? क्योंकि जान का खतरा था उनको। तो खाली पैसा कमाना नहीं है, अच्छी तरीके से पैसे कमाना भी है। ओके, यू नो पाब्लो चाचू, यू गाइस नो राइट? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर खाली पैसे कमाना है तो ड्रग्स स्मगल करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जान को खतरा रहता है ना। यू नॉट वांट टू अर्न मनी लाइक दैट। सो ओनली मनी फैक्टर फॉर बिजनेस इज नॉट। मेरे को पता है, मैं एक बार क्या करा था, एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि इफ यू आर चूजिंग अ क्वालिफिकेशन इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, कि अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाह रहे हो तो एसीसीए लो, मैनेजमेंट की तरफ से जाना चाह रहे हो तो सीएमए लो, फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जाना चाह रहे हो तो सीएफए लो, या फिर टैक्स ऑडिट की तरफ जाना चाह रहे हो तो एसीसीए एंड सीपीएमए से कुछ लोग। तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, लेकिन क्या होता ह्यूमन साइकोलॉजी, अच्छे कमेंट्स को नहीं, बुरे कमेंट्स को देखते हैं हम लोग। तो एक कमेंट कैसा आया मालूम, इसमें किसको इंटरेस्ट होता है? इंटरेस्ट तो पैसा कमाने में होता है। ये बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें आएगा, फिर वो करेंगे। ये थोड़ी ना इंटरेस्ट होता है। पैशन तो वो होता है सिंगिंग डांसिंग, उसमें इंटरेस्ट होता है, इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट होता है। पैसे किसमें ज्यादा कमा सकते हैं? अब मैं क्या समझाऊं उनको? जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट शैल आई एक्सप्लेन टू देम? कि आपको शायद अभी दिखेगा कि किसमें सबसे ज्यादा पैसे है, सैलरी किसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन हाउ यू प्रोग्रेस फॉरवर्ड, यू लुक इनटू इट। जैसे कि सपोज आपको अकाउंटिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन आप अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा पैसे बोल के काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप किसी दिन जॉब छोड़ दोगे। वो आपको मेच्योरिटी जब तक आएगी, अरे फिर अपने को थोड़ा ज्यादा, वी कैन लीव दैट एंड स्विच स्टफ। तो ऐसे लोगों को एग्जाम्पल कौन सा देना? पैसे ही कमाना है तो पाब्लो चाचू के जैसे और बहुत सारे लोग हैं, उन्हें ज्वाइन कर लो और पैसे कमा लो। वो क्या बोलते हैं, there are so many references but you guys don't watch movies and web series, तो मैं क्या बोलूं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो मुन्ना भैया? कौन है मुन्ना भैया? हाँ, क्या बोलते मुन्ना भैया? हमको ज्वाइन कर लो, प्रगति हो जाएगी तुम्हारी, या फिर नाम हो जाएगा, जलवा है हमारा इधर। तो क्या ज्वाइन कर लेते लोग उनको? उनकी ही मौत हो गई। इट्स नॉट ओनली यू चूज योर मैनेजर्स प्रॉपरली। बेचारे ललित को सूली चढ़ा दिए हो। खैर, देन मॉडर्न राइटर्स के पास आते हैं। ड्रकर, 5 बेसिक ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो, द मैनेजर अकॉर्डिंग टू ड्रकर सेज दैट यू हैव टू डेवलप पीपल, you have to establish yardsticks, you have to set objectives, you have to organize, motivate and communicate with the team. लेकिन यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डेवलप पीपल, विच मोस्ट पीपल जस्ट डेवलप क्यों करेंगे? मैं बताता हूँ आपको। I'm sharing with you real scenarios of business. What do people do is they don't develop people, मतलब ट्रेनिंग लर्निंग प्रोग्राम्स में नहीं लगाते लोगों को। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर सपोज आप डेवलप नहीं कर रहे हो आपके एम्प्लॉयज को, ये सोच के, क्या सोचते मालूम डेवलप कर रहे तो
अगर अपन इन लोग को डेवलप करें, इनके पीछे लर्निंग डेवलपमेंट के स्टफ इन्वेस्ट करे, तो फिर वो लोग क्या करते, दूसरी जॉब को चले जाते। हम उनको पढ़ाते लिखाते बनाते करते और वो लोग दूसरी जॉब को चले जाते हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के। तो क्या बोलते हैं आप लोग, सही है ये? नहीं करना चाहिए ना डेवलप उन लोग को, क्योंकि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। व्हाट शुड वी डू नाउ? हैव अनदर स्टेटमेंट हियर। व्हाट इफ यू डोंट डेवलप देम एंड दे जस्ट स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली? तो क्या होता है? तब भी नुकसान ही है ना आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी। सी, द ऑर्गेनाइजेशन इज द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. It's not the structure, not the product, not anything else. Organization is people. What type of people you have? You have positive, future oriented, good thinking people, or you have people talking about the past. अरे demonetization अच्छा नहीं था, जीएसटी अच्छा नहीं था, वो पहले वाला वैट ही अच्छा था, ऐसे लोग बात करने वाले अच्छे हैं? या फिर ऐसे लोग के जो हो गया अब आगे क्या करना है देखो, वो लोग अच्छे हैं? सो दैट टू टाइप ऑफ पीपल who talk about the past and just linger around it. या फिर कुछ ऐसे लोग के जो खाली खाली, I really like how Virat Kohli comes out of this, is that when he I heard that he says this, that maybe you have the records behind you, that you have done so many stuff, so many centuries, so many matches you've won. All those records do not help you in performing on that day. On that day, it is you who has to perform. All records does not matter. Do you guys get it? On that day, how you perform matters a lot. All other things goes in vain. अगर आप सोचते हो कि because you have performed earlier, अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, you will be still getting opportunities, तो you're wrong. Okay, you have to perform, then only you get opportunity. If you don't perform, you don't get opportunity. That is what is also to be understood in many businesses. आप काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अब बिजनेसेस में क्या होता है मालूम? कुछ लोग रहते हैं, हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनको क्या लगता है, वो लोग 10-15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ टिके हुए हैं और इसीलिए वो लोग आगे भी टिके हुए रहेंगे। तो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में they don't go for this check that who is relevant to us or not. और निकालने से पहले सोचते हैं, अरे this guy was with us only for 10-15 years, उसको कैसे निकाले? और 10-15 साल में वो कंपनी के साथ ही था, कंपनी से सैलरी मिलते जा रही थी, so he was fine at that time. तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा ईगर और बहुत ज्यादा काम करता था, लेकिन अब जो है काम नहीं कर रहा है, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए उसके पास, तो क्या हो गया, कंपनी भी स्लो डाउन हो गए वैसे लोग के साथ। थिंक अबाउट इट। वो लोग को निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। विराट कोहली को निकाल सकते? यस निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सबकी दुनिया की नजर उस पर है। इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ही विल बी आउट ऑफ द टीम। ओके, कुछ तो ही बोल के ही इज रेस्टेड, ही इज दिस दैट बोल के हटा देते, बिकॉज यू वांट द बेस्ट प्लेयर्स प्लेइंग। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो लोग एक वक्त पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिए, लेकिन वो बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अभी भी बचे हुए हैं। उससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो सो लटकी हुई है बीच में। What an organization needs to do is develop them. Develop them. If you cannot develop them, you cannot train them, then खोल दो उनका पट्टा, जाने दो उनको, खोल दो उनका पट्टा। ऐसा बहुत, हाँ, not the right verbatim, but let them free. Let them free, because if you cannot develop your team, it will be a problem. Just for example,
A person who is having 15 years of experience, when did he last time study? 15 years back. So whatever he has studied, that was there relevant 15 years back. 15 years back, did he learn artificial intelligence? Did he learn business intelligence? Did he learn how to operate on social media, how to leverage social media for their business? No. So what does he need to do? He needs to develop himself right now. Himself or herself should be developed right now. Okay. तो ये बात हो रही है कि you should have a regular development program ताकि वो relevant रहे आज के लिए और competitive भी रहे आज के वक्त के लिए. Is that clear, everyone? Now I am going to move forward. Set objectives, organize, motivate, communicate, establish trust, develop people, including themselves. Managers should also develop themselves. Then Mintzberg said 10 skills of the manager. क्या क्या है? He'll be a figurehead. Figurehead मतलब कि he should be leading from the front. He should be the person who is seen up to for doing that. This is how the work is to be done. Then a leader manages relationship with subordinates, especially in allocating tasks, hiring, training, and motivating staff. A leader should inspire, should give them that opportunity, whereas then seeking to build teamwork, foster employee commitment, बनाना पड़ता है, ये याद रख लो. Whenever you guys also are going to hire someone, okay, you hiring the best of the best person of available in the market will give you the worst pain in the wrong place. Think about it. अगर आप कोई 100 में से 100 लाने वाले एम्प्लॉय को आप हायर करते हो, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा. वो पूछेगा आप 100 में से 100 लाए क्या? आप बोलोगे नहीं, तो वो बात क्यों सुनेगा आपकी? The best person, okay, the best performer would always be a person who is not that good for the organization. क्यों? क्या होता? ऑर्गेनाइजेशन उस पर रिलाई करना शुरू कर देगी. And if he leaves organization, collapses. बहुत होता है ऐसा. ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो you should get a person who is scoring somewhere around 70% to 80%. क्यों? Because that would be the guy he's ready to listen to you also. Because he knows that there is scope of improvement. And to listen to you, you will get scope of improvement. And a person who has achieved 70 to 80% is also not a dummy candidate. You can understand that. वैसे 70 to 80% के लोग आप जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा लो and develop them, foster them. That's your work as a leader. You are not going to get the best person. अब ये देख लो. When you go for hiring, are you going to get any great personalities who from the day one can start working for you? No. You should develop them. उनको बनाओ आप. और ये भी सोच के बनाओ कि if suppose they are going to leave, they are going to leave. If a employee is going to leave, बहुत दुख होता है organization को. लेकिन it's fine. If they are leaving, they are leaving. You should wish best for them. कि हाँ, आप जितना यहाँ पे सीखते थे, आपका शायद appetite जितना था यहाँ पे is fine. I guess your appetite is done here. You can go for much interesting work further ahead. Okay, and that's how they go forward. I guess understanding this, you have to foster employees. You have to make them superstars. They cannot just be superstars coming to you directly. ये जो है ना बहुत lack होता है.
अब जैसे कि देखो, आप लोग क्रिकेट तो फॉलो नहीं करते हैं ना? क्यों फॉलो नहीं करते? देखना शुरू करो आपसे। इंडियन क्रिकेट टीम में क्या हुआ? इन 2014-15 धोनी left captaincy of test, and he retired also from test. And then in the last few years of his career, he left captaincy of ODI also. And then he was still there because he did not retire. So what did he do? He was transitioning. Matlab, he was making another best leader for the country, and that was Virat Kohli. So though Virat Kohli was the leader at that time, MS Dhoni was still playing. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लीडर ने दूसरे लीडर को बनाया. He fostered it. In the same manner, now India should also find another youngster who can take the team forward for a long period of time. तो ऐसा क्या होता है? टीम ट्रांजिशन होती है. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका देखो. श्रीलंका आर वन टाइम वर्ल्ड चैंपियन. 2014 में वर्ल्ड चैंपियन थे वो लोग फॉर दी T20 वर्ल्ड कप. लेकिन उसके बाद से जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे वो लोग खत्म हो गए. मतलब रिटायर हो, खत्म नहीं, अभी भी जिंदा है वो लोग. ना देव रिटायर्ड ना. ऐसा रिटायर हुए वो लोग अपनी टीम को ट्रांजिशन, लीडरशिप ट्रांजिशन नहीं कर पाए. देयर वाज नो ट्रांजिशन व्हिच हैपेंड. तो उसके बाद क्या हुआ? उनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलने की जरूरत पड़ गई. अभी तक भी उभर के नहीं आए वो लोग. आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडर हियर? और ये जो लीडरशिप के जो सजेशंस होते हैं, उनके टीम के कोच वोच नहीं करते. वो दे हायर अनदर लीडरशिप कोच ओनली फ्रॉम आउटसाइड. पीपल लाइक अस ओनली गो देयर एंड गिव देम दैट दिस इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम. आप ट्रांजिशन, व्हेन विराट कोहली is signing off from captaincy, they have given captaincy to whom? Rohit Sharma, who is 1 year senior to him, who will retire much more earlier. Who is going to be next now? And next person should be someone who's going to play for the next 10 years. They have to find a person like that and train them, foster them, make them a much better leader. वरना क्या होता, वो टीम जो चलते रह रही, बनते रह रही, वो बिखर जाती. जो काम जो चलते रह रहा वो खत्म हो जाता. अब जैसे कि अपना टिम टिम कुक. टिम कुक यार, टिम कुक कौन है बोलो? कौन है टिम कुक? एप्पल का सीईओ है ना? लेकिन एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स. Steve Jobs was a CEO. After Steve Jobs, who is that? Tim Cook. Why Tim Cook? हाँ, स्टीव जॉब्स मर गया इसलिए तो टिम कुक है. लेकिन टिम कुक को क्यों चूज करें? ओके. अच्छा, does Tim Cook have that what do you call that IT mind? उसके पास वो IT माइंड था होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और फ्यूचरिस्टिक बनाने का जहन था, इसलिए लिए उसको. यस और नो? तुम लोग के फोन के पूरा इंस्टाग्राम में चेक करने वाला हूं कि तुम लोग किस किस को फॉलो करते हैं. पता नहीं क्या भरा हुआ है अब वहां पे. ये तो दुनिया को मालूम है कि टिम कुक इज अ नॉन आईटी गाय. यस सर बोलते जा रहे मेरे साथ तुम लोग. तो मतलब पक्का है तुम लोग भी उस वक्त घर में जाके क्या पढ़ो. ही इज नॉट अ डेवलपर. टिम कुक इज नॉट अ डेवलपर. और एक बात सुन लो. Steve Jobs also did not have any developing skills.
कंप्यूटर डेवलपिंग स्किल्स नहीं था. Steve Wozniak was a IT hardware guy, and he still is now. स्टीव जॉब्स के पास भी नहीं, और हमारे अभी जो टिम अन्ना है उनके पास भी नहीं है. But what do they have? They have leadership skills. They have leadership qualities. And because of their leadership qualities, he is the leader of that organization. It's not because he's having product knowledge. It's not because he's the inventor of the product. It is because he has leadership, and above all these stuff, ये है उसके पास, बताता हूं मैं. Let me just write it down in front of you. Is it connected? This one thing which he has: interpersonal skills. क्या क्या हो रहे हैं वो? He's the figurehead, he's the leader, he's listening between, मतलब he's becoming the communicator between the team and the work to be done. आपको पता है 2001 में उनको चाहिए था, मतलब एप्पल को चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय चाहिए था, और एप्पल वाज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश ऑफ, मतलब डूबती हुई कंपनी थी एप्पल वो वक्त पे. वो वक्त पे स्टीव जॉब्स अपने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में व्हाइट जूता पहन के बाहर निकल गया था इन सर्च ऑफ अ गुड मैनेजर. तो फिर ही फाउंड आउट टिम कुक. टिम कुक at that time was heading the supply chain of Compaq. Compaq सुने नाम कभी? अरे Compaq यार, monitors they used to manufacture, वो भी कंप्यूटर्स के अंदर ही था वो. He was, in a really good position of Compaq, which was growing also. Now he had to make a decision. Steve Jobs आके बोला कि देखो, this company Apple, I really believe this can be the next big thing, biggest thing. It has done wonders till now. It will do wonders. I'm motivated to do it, and I will do it. And I'm looking out for individuals who can, match that vibe with me and be with me, and we can start with it and do this. Okay, he actually goes there and pitches that, come and join Apple. And then अब उसके पास, टिम के पास एक ऑप्शन है, कॉम्पैक, जिसमें उसको रेगुलर सैलरी आ रही है, या फिर एप्पल, जिसमें पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि वो वक्त पे तो नहीं समझ में आ रहा था. बट देन टिम बिलीव्ड इन दोज वर्ड्स ऑफ स्टीव जॉब्स, दोज इंस्टिंक्ट्स ऑफ स्टीव जॉब्स. वो बोलते हैं ना, इंस्टिंक्ट्स मतलब अपने अंदर का सेल्फ कुछ बोलता कि ये कर लो. He believed in that and then went on to join Apple, and the rest is history. और जब बात आई नेक्स्ट सीईओ बनाने की, it was then chosen on that person who believes in his inner self, who believes in his instincts. And because Tim Cook believed in his instinct while joining Apple, तो उनको भी कुछ ऐसा ही बंदा चाहिए था, who can be the next, cannot be the next Steve Jobs, but can be a person who could lead Apple. And that's how it is. समझ आ रहा है आप लोग को? ये सब जो हम लोग बात करते हैं, this is reality. Okay. Then informational skills of manager who can monitor, disseminator, spokesperson is a really good skill of a manager. To spread information widely, to understand reports properly, to go out there and speak to people, spokesperson who understands well, who explains well.
just like our Prime Minister Narendra Modi. A really good orator. He has a quality check for his speeches, you know that? Big quality checks before he speaks. हाँ, वो कभी कभी ब्लंडर्स हो जाते हैं उसके तरफ से, बट ही मेक्स मीम मटेरियल फॉर पीपल एंड ही सेज आल्सो गो अहेड मेक मीम मटेरियल. He does not mind because he is also human to make errors. But here, before he goes out there to speak, there's a lot of quality checks which happen. Like who's the audience, what he has to speak, what are the reports coming in, what is going to happen. There's so many things which comes in there. Information is gold. Then decisional, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, and a negotiator. A person who's ready to take it on, take it all. Whatever problems are there, he is able to handle it. And he is able to manage his resources properly. Optimally, he can manage his resources and also negotiate to come up with the best deal. Okay. Now, according to Mintzberg, managers need to be able to collect and sort information to enable effective decisions to be made. Which of Mintzberg 10 skills? This is description of collect and sort information to enable effective decisions to be made. यही है. Manager collects and sorts information which is used to build. Monitor. Okay. Then comes leadership. Leadership trait theories. हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. सबसे पहले आता Blake and Mountain, the managerial grid. Robert Blake and James Mountain carried out research into managerial behavior and observed two basic dimensions of leadership. Number one is concern for production, मतलब काम बराबर हो रहा है या नहीं. दूसरा concern for people, लोग खुश है ना काम करते हुए, या फिर are they satisfied on doing the work or not. Based on the results of staff questionnaire, the managers can be plotted onto the Blake and Mountain's grid. मतलब ये देख लो, low concern for production, low concern for productivity, he is 1 by 1 worst leader. Okay, a worst person as a leader, who's not thinking of his team nor for his production. Then another guy here, 1 by 9, low concern for production and high concern for people. मतलब ये तो बहुत ही अच्छा बन गया. ठीक है, लोगों के लिए अपनी जान भी देने तैयार है, लेकिन काम तो हो ही नहीं रहा है. That's also wrong. Then this guy, you see, high concern for people, high concern for production. Impossible. Too good to be true. Then here, 9 by 1, high concern for production, चाहे लोग मरो या कटो, काम होना चाहिए. बहुत मुश्किल. And then somewhere here, optimal 5 by 5, like 50-50 वो है. लेकिन आगे चलते हुए ये लोग चलते ज्यादातर कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी उनका हाई रहता और पीपल के लिए थोड़ा लो रहता. ये लोग थोड़ा ज्यादा चलते. मिनिमम एटलीस्ट यहां तक तो आना ही आना वो लोग, या फिर एटलीस्ट समवेयर हियर. दिस इज द पॉइंट वेयर अ मैनेजर शुड ट्राई टू रीच. कंसर्न फॉर पीपल भी अच्छा हो और कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो, तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी अच्छे से. जैसे कि 1 by 1
मैनेजमेंट इम्प्रोवरिस्ट, मतलब कुछ भी काम के नहीं है। देन सेकेंड वन इज कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मतलब सब लोगों को खुश रखो, काम हो नहीं हो पता नहीं। फिर टास्क मैनेजमेंट, काम होना चाहिए, बाकी कुछ क्या भी हो। देन मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट 5x5। एंड देन 9x9 टीम मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल है अचीव करना, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है अचीव करना, बट स्टिल इट इज देयर। You using the scores shown on the above grid make suggestion as to how particular manager could improve his managerial style. मतलब ज्यादातर like going towards 7x7 or 7x6, 6x7, this is kind of ideal. उसके लिए क्या है, लोगों को कंसर्न बताओ, आप प्रोडक्शन का भी कंसर्न बताओ और काम आगे बढ़ाओ. Now I'm not going to go through benefits and drawbacks of it. Then comes Ashridge Management College. यहाँ पे क्या है, मैनेजर के स्टाइल बता रहे हैं. Who tells, खाली बात करते हैं, मतलब only tells, does not hear. Who only tells, does not hear. Who only tells. Can you speak back to him? No. Then who sells? Manager still makes all the decisions, but believes that team members must be motivated to accept in order to carry out them properly. So that you go and try, kind of convincing them people. Then consults, the manager confers the team and takes views into account. कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, and then he comes up with a suggestion. And then last one is joints. The leader and the team members make the decision together on the basis of consensus. सबकी सोच को एक जगह लेकर आप एक डिसीजन बना रहे हो. So these are the type of leaders: autocratic, persuasive, participative, and democratic. So it tells, sells, consults, joins. Write it down. जैसा कि मैं आप लोग से पूछता हूं के, या सपोज मैं आपको बोलता हूं कल से क्लास सुबह 9 बजे से शुरू होगी, फिर मैं बोल रहा हूँ कैसे भी कल सुबह प्लीज 9 बजे आ जाओ. फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं, 9 बजे शुरू करना चाहिए या नहीं क्लास को. फिर लास्ट वन, आप लोग क्या बोलते हैं, क्लास कितने बजे शुरू करूं कल. I have given you all 4 statements. Moving forward. Tells may be best in crisis or when quick decisions need to be made. Tells only goes on. Tells or sells may be best for demotivated or unskilled workers who may lack the skill or willingness. तो उनको सीधा सीधा बोलो और काम कराओ. Now you guys can answer this. I'm not answering it for you right now. Then contingency theories. आ गए हमारे पास Adair. Adair says action centered leadership. Adair suggests that any leader who has to strive to balance 3 interrelated goals in order to be effective. These 3 goals relate to the needs of the group and individual and task. What are the task needs, group needs, individual needs? सबके needs को meet करते हुए, if you are able to do it, then you are a better leader. जैसे कि task needs क्या है, objective setting, planning, task allocating, responsibility setting, performance. Group needs क्या है, communicating, team building, motivation, discipline. Individual needs क्या है, coaching, counseling, developing, motivating. ये सब उनके जरूरत है. And this is coming further also. Then Fielder talks about contingency theory. He says psychologically distant managers or psychologically close managers. What do you mean by this? Seek to keep their distance from subordinates by formalizing roles and relationships within the team, are withdrawn and reserved in their interpersonal relationships, prefer formal communication, ask are primarily task oriented. मतलब आप और मैनेजर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप थोड़ा सा फॉर्मल है.
Whereas psychologically close managers do not seek to formalize roles and relationships, prefer informal contacts to regular staff meetings, are primarily person oriented rather than task oriented. So, which of the two styles is the most effective? Fielder argued that this depends on the circumstances of the manager. कुछ भी सही ऐसा नहीं है, जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन चलते रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दे कैन मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू इट. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? यू विल फाइंड आउट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस. At large, what is most advantageous, you would be doing it. Then we have few tertiary understandings. फिर आए बेनिस. बेनिस क्या बोलते हैं कि लीडरशिप should be transformational. Just now I gave an example of a cricket team. Indian cricket team कैसे वो लोग transform करे from Dhoni to Virat Kohli, and then it should have been transformed from Virat Kohli to a much younger person while doing it, but it did not happen. No, that's a different concern because they lacked leadership qualities. Transactional leaders is बस वो लोग सही है बोल के बताते, वही वक्त के लिए वो लोग सही रहते, but it won't be futuristic. Short term रहता transactional. Transformational is something you make more leaders. If you find a leader और उसके हाथ पे और leaders नहीं बने, then he is a transactional leader. The management of attention, the management of meaning, the management of trust, the management of self. Leaders should always be aware of their own strengths. A good leader must be consistent and honest. All good stuff for the leader. Then Carter talking about managing change. Whenever there's a change or transformation from one to another, from one leader to another, or the management is changing from one to another, he should be highly participative and he should be involving in it. He should communicate, educate that why we are doing it, and it is for the betterment of the organization at large. Facilitating and supporting the organization in this change. Manipulation, co-optation, negotiation, agreement. Matlab, if you are changing for the better, you would want everyone to understand it, that why we are doing it, and it should actually be good for the organization at large. Okay. Then leadership to motivate. Hayford says that अब मोटिवेशन इज फाइन, थोड़ा थोड़ा वक्त के लिए पेप टॉक्स के लिए अच्छा है, जैसे सलमान खान दिया था लास्ट में उसको के बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना, ही गिव सम मोटिवेशन एंड द बॉम्ब गॉट डिफ्यूज. अब हर सिचुएशन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना. Then contingency conclusion are often seen as most practical as they encourage leaders to understand their current circumstances and adapt their approach accordingly. So basically, this leadership topic is really broad enough. It's not limited to it. You can learn and talk about many other leaders who would be the best example for this. Then there is some testing understandings. In fact, we are done with this chapter. But if you see, I have left for you many testing understandings for you to solve. And you guys should be solving it. From here, we move on. Like in this session, we will be stopping here. But in the next session, we are starting with recruitment and selection of employees. So be ready for it. In tomorrow's session, we have this and we start with this, but you should complete those test understandings by today only. Or you want to do it now, you can do it. Clear? Ready? Let us stop this session then.